नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। सीधा रुख करेंगे अमेरिका की तरफ, क्योंकि अमेरिका में आज से बाइडेन युग की शुरुआत होने वाली है। अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति आज शपथ लेंगे, थोड़ी ही देर में शपथ लेंगे। छावनी में तब्दील किया गया है वाशिंगटन को, क्योंकि इससे पहले यह देखने को मिला था ट्रंप लगातार अपनी हार को स्वीकार करते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। और जिस तरीके से उकसाने का ट्रंप पर आरोप है कि ट्रंप ने अपने समर्थकों को उकसाया और वहां पर हंगामा हुआ था, हिंसा देखने को मिली थी और हिंसा का साया आज भी इस शपथ ग्रहण समारोह पर है। इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं वाशिंगटन डीसी में। नवनियुक्त राष्ट्रपति वहां पर पहुंच चुके हैं। शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब कुछ ही देर में यहां पर शपथ ग्रहण करेंगे जो बाइडेन, नवनियुक्त राष्ट्रपति। Ladies and gentlemen, the Vice President of the United States, Honorable Michael R. Pence and Mrs. Karen Pence. डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही व्हाइट हाउस को खाली कर दिया। राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में आज जो बाइडेन शपथ लेंगे और आपको बता दें कि उनके साथ साथ भारतीय मूल की कमला हैरिस भी उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। लेकिन इस कार्यक्रम से पहले जिस तरीके से नववर्ष की शुरुआत में ही 6 जनवरी का वो दिन था जब ट्रंप पर यह आरोप लगा कि उन्होंने अपने समर्थकों को उकसाया है और हिंसा देखने को मिली थी, उसमें कई लोगों की मौत भी हुई थी। उसके बाद हालांकि ट्रंप की तरफ से भी शांति की अपील की गई थी, लेकिन तब तक हंगामा हो चुका था। और अब उसी हंगामे को देखते हुए जिस तरीके से ट्रंप लगातार ये कहते रहे कि उन्हें हार स्वीकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने धोखाधड़ी का भी आरोप जो है वो लगाया और इसी के मद्देनजर अब पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। छावनी में तब्दील किया गया है वाशिंगटन डीसी को और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस कार्यक्रम में सिर्फ 200 लोगों को बुलाया गया है और खास बात यह है कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी यहां पर मौजूद हैं। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे आज जो बाइडेन थोड़ी ही देर में। जो बाइडेन ने शपथ लेने से पहले अपनी पत्नी के लिए भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने आप को सौभाग्यशाली बताया है। वाशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल का यह नजारा आप देख रहे हैं।
राजधानी वॉशिंगटन डीसी को छावनी में तब्दील किया गया है सुरक्षा के मद्देनजर, क्योंकि इससे पहले वहां पर हिंसा भी देखने को मिली। जो बाइडेन की तरफ से जिस तरीके से इससे पहले वहां पर हिंसा देखने को मिल चुकी है, तो बाइडेन की टीम ने समारोह का पूरा ढांचा ही बदला और राजधानी तक आने से बचने और घर बैठकर टीवी पर शपथ ग्रहण समारोह को देखने की सलाह दी गई है। इस बार सांसद अपने साथ सिर्फ एक व्यक्ति को लेकर के आ सकते हैं और इस तरह समारोह में 200 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति है। कई तरह की आशंकाएं भी जताई गई हैं इस कार्यक्रम के दौरान। अमेरिकी संसद भवन में यह कार्यक्रम चल रहा है और आप देख सकते हैं बराक ओबामा वहां पर मौजूद हैं। बराक ओबामा संसदों से वहां के मिल रहे हैं, कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं बराक ओबामा। तो राष्ट्रपति रह चुके हैं और लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने बराक ओबामा, लेकिन अमेरिकी संविधान के अनुसार वहां पर जो 10 साल तक राष्ट्रपति पद पर रह चुका है वो फिर चुनाव नहीं लड़ सकता, फिर से राष्ट्रपति नहीं बन सकता, इसलिए वो अब इस रेस से बाहर है। लेकिन 10 साल तक उनका कार्यकाल जो चला वो ऐतिहासिक रहा और आज भी बराक ओबामा को लोग वहां पर सम्मान के साथ याद करते हैं। और वहीं इस कार्यक्रम के साथ ये खास बात रही कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रहे, जब उन्होंने विदाई ली, वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। हिंसा की आशंका को देखते हुए इस बार पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के और लोगों से ये अपील की गई है कि वो टेलीविजन पर शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम देखें। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। भारतीय मूल की कमला हैरिस हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं नवनियुक्त राष्ट्रपति जो बाइडेन। कुछ ही देर में शपथ लेंगे जो बाइडेन। शपथ ग्रहण के लिए यह कार्यक्रम वहां पर रखा गया है और अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले कमला हैरिस। Mr. President-elect, Madam Vice President-elect, members of Congress and the judicial branch, former presidents and first ladies, vice presidents, leaders from abroad, and a whole bunch of Bidens. America, welcome to the 59th presidential inauguration, where in just a few moments, Joe Biden and Kamala Harris will take their solemn oaths. This ceremony is the culmination of 244 years of a democracy. It is the moment when leaders brought to this stage by the will of the people promised to be faithful to our Constitution, to cherish it and defend it. It is the moment when they become, as we all should be, guardians of our country. Have we become too jaded, too accustomed to the ritual of the passing of the torch of democracy to truly appreciate what a blessing and a privilege it is to witness this moment? I think not. 2 weeks ago, when an angry, violent mob staged an insurrection and desecrated this temple of our democracy, it awakened us to our responsibilities as Americans. This is the day when our democracy picks itself up, brushes off the dust, and does what America always does: goes forward as a nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
This conveyance of a sacred trust between our leaders and our people takes place in front of this shining Capitol dome for a reason. When Abraham Lincoln gave his first inaugural address in front of this Capitol, the dome was only partially constructed, braced by ropes of steel. He promised he would finish it. He was criticized for spending funds on it during the Civil War. To those critics, he replied, "If the people see the Capitol going on, it is a sign we intend the Union shall go on." And it did, and it will. Generations of Americans gave their lives to preserve our republic in this place. Great legislation to protect civil rights and economic security and lead the world was debated and crafted under this dome. Now it falls on all of us, not just the two leaders we are inaugurating today, to take up the torch of our democracy, not as a weapon of political arson, but as an instrument for good. We pledge today never to take our democracy for granted as we celebrate its remarkable strength. We celebrate its resilience, its grit. We celebrate the ordinary people doing extraordinary things for our nation, the doctors and nurses on the front line of this pandemic, the officers in the Capitol, a new generation never giving up hope for justice. We celebrate a new president, Joe Biden, who vows to restore the soul of America and cross the river of our divides to a higher plane. And we celebrate our first African American, first Asian American, and first woman vice president, Kamala Harris, who stands on the shoulders of so many on this platform who have forged the way to this day. When she takes the oath of office, little girls and boys across the world will know that anything and everything is possible. And in the end, that is America, our democracy, a country of so much good. And today, on these Capitol steps and before this glorious field of flags, we rededicate ourselves to its cause. Thank you. It is now my honor to introduce to you the senator who has worked with me and so many others to make this ceremony possible, my friend and the chair of the inaugural committee, Missouri Senator Roy Blunt. Well, I should have known when Senator Klobuchar got involved, at least there'd be a touch of snow up here this morning. Of all the things we'd considered, I don't think snow was on my agenda till I walked out the door a moment ago. But thank you, Senator Klobuchar, and thanks to the other members of the Joint Congressional Committee on the inauguration as we officially begin the 59th inaugural ceremony. I also want to thank the Joint Committee staff and our partners, particularly our security partners, for the way they've dealt with unprecedented circumstances. When I chaired the inauguration 4 years ago, I shared President Reagan's 1981 description of this event as commonplace and miraculous. Commonplace because we've done it every 4 years since 1789. Miraculous because we've done it every 4 years since 1789. Americans have celebrated this moment during war, during depression, and now during pandemic. Once again, all three branches of our government come together as the Constitution envisions. Once again, we renew our commitment to our determined democracy, forging a more perfect union. That theme for this inauguration, our determined democracy, forging a more perfect union, was announced by the Joint Committee before the election with the belief that the United States can only fulfill its promise and set an example for others if we are always working to be better than we have been. The Constitution established that determined democracy with its first three words:
declaring the people as the source of the government. The Articles of Confederation hadn't done that. The Magna Carta hadn't done that. Only the Constitution says the government exists because the people are the source of the reason it exists. They immediately followed those first three words with the words to form a more perfect union. The founders did not say to form a perfect union. They did not claim that in our new country nothing would need to be improved. Fortunately, they understood that always working to be better would be the hallmark of a great democracy. The freedoms we have today, the nation we have today, is not here just because it happened, and they aren't complete. A great democracy working through the successes and failures of our history, striving to be better than it had been. And we are more than we have been, and we are less than we hope to be. The assault on our Capitol at this very place just 2 weeks ago reminds us that a government designed to balance and check itself is both fragile and resilient. During the last year, the pandemic challenged our free and open society and called for extraordinary determination and sacrifice, and still challenges us today. Meeting that challenge head on have been and are healthcare workers, scientists, first responders, essential frontline workers, and so many others we depend on in so many ways. Today we come to this moment. People all over the world, as we're here, are watching and will watch what we do here. Our government comes together. The Congress and the courts join the transition of executive responsibility. One political party more pleased today and on every inaugural day than the other. But this is not a moment of division, it's a moment of unification. A new administration begins and brings with it a new beginning. And with that, our great national debate goes forward, and a determined democracy will continue to be essential in pursuit of a more perfect union and a better future for all Americans. What a privilege for me to join you today. Thank you.